Good morning, everyone. Welcome to this discussion on the ODF and JMP data requirements. So we would be starting the meeting in another 5-10 minutes. We'll just request that all stays join. So we'll ensure that more people join and we'll just start shortly. Thank you all. কারো বের করে দেওয়া শুনি কারো বের করে দেওয়া কেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত সিপিএস আগে
चलो मैं हो जा रहा है। तुरंत वो म्यूट हो रहा है बाहर। उसको स्क्रीन पे करो। Very good morning to each one of you.
we are going to start this webinar that is very important if we see from the perspective of ODF certification and also this joint monitoring program of United Nations. I hope it is audible. Anybody can confirm it is audible? Okay, fine. Okay. So today quickly we are going to discuss on data requirements for ODF and this JMP. As I mentioned, ODF certification is going to be started very shortly, and this JMP is international ranking of India on sanitation achievements. That is also related to this ODF certification data. So both are very important and it is imminent. So it is very much essential that requisite data by ULTs is filled up in this Swachhatam portal. Next. As you are aware that in ODF protocol, ODF plus protocol, the first 6 point that has been highlighted in light green, you say safe discharge of sewage, including septage from CTPT and IHHL, adequate treatment capacity of sewage and septage, desludging has been carried out on demand basis, mechanized cleaning of sewer and septic tank, all desludging vacuum tanks, operators and registered and licensed, sufficient capacity of desludging vehicle and workforce. These all data is part of ODF++ certification, and this will be examined here on desktop also and in the field also. So it is very essential, keeping in view especially that in case of ODF++, we have kept our target for achieving this certification for 100% towns, notified towns, and water plus 50% of the towns. So it is very, very important that ULBs fill up correct information, and based on that, agencies, they are able to quickly do justice, and your ranking also is improved to meet these targets of Swachh Bharat Mission Urban 2. Next. In case of water plus protocol also, safe discharge of sewage including septage and this adequate treatment capacity and operational efficiency, this is important. Similarly, sufficient capacity of desludging vehicle and jetting machines, and also reuse. These are the things that is required. So in this background, we will be coming up that where is the requirement of data strengthening. Please go to next one. Yes, this is one snapshot we have taken from ODF protocol that is already published. If you see in the right hand side, it is clearly mentioned that following parameters will be assessed on sample basis from IHHL. So to assess those on sample basis, it is important that requisite data is filled up in Swachhatam portal. That is very, very important. So keeping in view toilets connected to sewer network, septic tank with soak pit, septic tank without soak pit connected to an open drain, septic tank without soak pit connected to a closed drain, twin pit and single pit. This is the categorization that whatever the households are there, whether they are connected to sewer network or they are connected to septic tank with or without soak pit, with closed or open drain or single pit, twin pit, that data needs to be correctly filled up in the portal, and that will be basis for this both ODF certification and also for JMP requirement. Here, please go to next one. Quick curry. Yes, this JMP safely managed sanitation I have been earlier also mentioning at various occasions, and this is one objective that worldwide there is initiative that all population at least they get safely managed sanitation. In this case, the requirement is in very simple words that the excreta generated by one person should not be exposed to any other person. So for that,
this improved sanitation facility is very important. And to make the estimate of safely managed sanitation, this JMP has worked out a data sheet, and based on the data available, secondary data available, maybe published one on the MIS Swachhatam portal, this data will be utilized. So if you see here, already it is mentioning wastewater treated off-site. I am seeing in figure wastewater treated off-site, and then excreta emptied and treated off-site, and excreta treated and disposed in situ. ये तीनों कैटेगरीज आप अच्छे से समझते हैं. If we are able to achieve, and already majority of our urban local bodies are doing and achieving, it is only that adequate and correct data is not populated on Swachhatam portal. Because of that, you will see that the ranking we are getting is somewhat not very, हम कह सकते हैं, appreciable. Go to next one. You see, this is very important, and it will be a eye opener that in urban area, lot of efforts is being done. Sanitation challenges are also very tough. All urban local bodies and related people are also putting a lot of efforts to improve continuously on day and night basis. But if you see these things that is put in red box, disposed of in situ, if you see the total that is score that is there here is 48. Out of that, that is national level, that is combined of rural and urban. It is for 2024. If you see, rural is getting 59% that coverage, and urban ke case mein it is coming 28. So we know that in urban area, all households are either connected with sewer network or with soak pit, or at least sometimes twin pit, and somewhere these septic tanks are connected to open or closed drain. Because of want of that information, we are ranked, we are getting this safely managed score only 28 in this case of disposed of in situ. So if you populate correct data, and here all our team is there from Swachh Bharat Mission Urban, also state teams are also there. You might have seen in past few days they are pursuing, and ULB level by you are putting a lot of efforts that it is visible on portal also. And in connection what our coordinators from here, National Urban National PMU, and also technical units of CPHEO, they are in touch, and we are finding that lot of efforts is being made from your side. But thoda sa while doing this, we have to take due care so that whenever we are making effort, that is fruitful. It should not happen. Okay, abhi it is fine. मेरे केस में तो it is there. Not here, not audible. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Anybody can Yes, sir. confirm, am I audible? You are audible, sir. You are audible. नहीं वो खास है क्या? हाँ? एक बार बोल के देखो. नहीं ये क्रॉस्ड है, माइक ही क्रॉस. Any, sir, you are audible, Last. sir. Chaurasia, sir, you are audible. Yeah, actually. I think sir is audible. This is fine. We can. Is it audible now? Is it audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Is it audible? Manish, are you Sir, able yes, to sir, hear me? you are audible, sir. You are audible. You are audible, sir. Again, share that. It has gone.
थोड़ा जब हम एंड में जाए तो पहले ही फिर चेंज कर दो, वेट करना पड़ेगा। प्लीज शेयर प्रेजेंटेशन। Just 1 minute, we are sharing. Here was some power failure. That's why we got disconnected. We are just matlab sharing presentation. Please wait. इसमें वो नहीं है इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर विल शेयर, ये इसमें है। हाँ इसमें से करो, आई विल डू दैट। अभी इसी से शेयर कर दो, हटा दो। हाँ इसी में है, आई विल इसी से कर दो, आई विल मैनेज। I hope it is visible. Manish, anybody can confirm? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir, and you are audible also. Yes, sir. Visible. इसको थोड़ा सा confirm करो तो। Anybody from PMU or Yes, sir. anybody can confirm whether the screen is visible? Yes, sir. Visible, sir. Visible. Manish, are you able to hear? Yes. No. Yes, sir. Anybody from PMU? Hello. म्यूट कर रखा कहाँ से? Okay. So thank you very much. Again, we'll start. So what I was mentioning that in case of this rural and urban comparison, if you see, lot of hard work is being done by ULBs in urban area, and
majority of matlab households are covered with, let us say, safe sanitation. If we see whether it is connected with septic tank or soak pit or even sewer network, but our score is less. Similarly, emptied and treated, in this case also our score is very less. I will say it is only 2% they have given, but you will be surprised in case of these things. Even in each ULB, whatever the houses are connected, if sewer network is not there, they can be simply mapped. So once this information is fed here, it will be very easy for us to represent quickly and get this data emptied and treated improved. Because in fecal sludge management, around 1500 STPs are there. They can be good for co-treatment. All their population in these STP towns, they can be considered. And similarly, 1200 to 1500 small to medium size FSTPs are also there. Once that data is populated, these all population of around, let us say, 3000 towns or so, they will be all covered, and this figure will immediately go up. So total score in urban, we are getting this 45. This figure will go somewhere 80, 85 and something like that. Similarly, wastewater treated, we all know from various sources, it is somewhere around 40%, 45% that is being treated, installed capacity, and even actual treatment is also more than 35%. But here, because correct data is not entered, that's why it is showing only 15%. This is leading to very less marking, I will say, and international ranking also of India, it is impacted. Everybody in the world at this present time, they know स्वच्छ भारत में इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव कहीं भी स्वच्छता पर नहीं चला, और इस इनिशिएटिव के बेसिस पे जो एफर्ट हुआ है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड हियर थ्रू डेटा, क्योंकि वर्ल्ड में तो जो हम कर रहे हैं डेटा के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होगा ना। तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने हार्ड वर्क किया है उसका हम अवार्ड भी लें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, दैट हाउ मच स्वच्छ भारत मिशन है चेंज सैनिटेशन सिनेरियो इन द कंट्री। इसके लिए कोई बहुत हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब नहीं अभी क्रिएट करना है, जो हो रहा है उसको चलने दें, जो हो गया है ओनली उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन आप फिलअप करें, इमीडिएटली दिस स्कोर विल गो अप। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी नहीं शेयर हो रहा है। अच्छा, हाँ। So I will take point by point here. This disposed of in situ, emptied and treated, and wastewater treated. These 3 points where we can improve our score. Those things we will take up here in subsequent slides, and would like to explain that how we can do. Disposed of in situ मतलब जहाँ पे एक्सक्रीटा जनरेट हो रहा है, सीवेज जनरेट हो रहा है, वहीं पे जब हम उसको प्रॉपरली कर सकें, जैसे कहीं पर सेप्टिक टैंक विथ सोक पिट है, इन सिटू हो गया। जब कहीं पे आपका लेटेस्ट से कोई ऐसे जोकासो टाइप का सिस्टम लगा है, दैट इज आल्सो इन सिटू। जब कहीं पे आपका ट्विन पिट लगा है, दैट इज आल्सो डूएबल। एंड इवन इन दिस केस जब आपका सेप्टिक टैंक है वो चाहे ओपन ड्रेन या क्लोज ड्रेन से कनेक्टेड है, जैसा आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, इस डेटा को भी आप उसमें फिलअप कर दें तो आई थिंक इट विल बूस्ट ए लॉट दैट वी आर सेफली कंटेनिंग। Similarly, second point, if you see the household CTPT connected to twin pit, then household CTPT connected to discharging open, and those in single pit, ये सारा डेटा जब आप उसमें करेक्टली, देन दिस स्कोर विल गो अप। हम लोग बहुत अच्छा उसमें इंटरनेशनल लेवल पे करके कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग और सैनिटेशन को जो हमने हार्ड वर्क किया है सिर्फ अचीव करने के लिए यूजफुल होगा। हम लोग, आप लोग बीच बीच में सुने होंगे कि रोबस्ट इंडिया के तरफ हम लोग सारा प्लानिंग और सैचुरेशन के तरफ कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जब ये हमारा डेटा फिल्डअप रहेगा तो देन हम लोग ये पता कर पाएंगे कि वेयर इज
actual gap and what effort to be put in, so that exact whatever the planning and estimation will be there, accordingly we will be able to achieve in time bound manner and in a credible manner. अभी क्या होता है, कभी कभी हम टारगेट करते हैं लेकिन अंत में जाकर के फिर कुछ गैप रह जाता है। वो यदि ये डेटा एकदम करेक्ट होगा तो वो भी जो थोड़ा सा गैप आता है दैट विल नॉट बी देयर। हम लोग एकदम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस चीज को हम यहाँ तक लेकर के कवर कर पाएंगे। तो डिस्पोज्ड ऑफ इन सिटू में ये इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो डेटा ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ इन सिटू उसी का जो पार्ट है, इसमें हम एक एग्जांपल से करना चाहेंगे कि एक हाउस होल्ड एक ही जगह कनेक्टेड होगा, चाहे वो सीवर नेटवर्क से हो या सीटीपीटी से कनेक्टेड हो या इवन आपका जो हाउस होल्ड से कनेक्टेड हो, ये सारा एक ही जगह होगा, वो कॉलम रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ये देखें, 100 हाउस होल्ड से कहीं पे उसमें लेटेस्ट से 20 कनेक्टेड विथ सीवर नेटवर्क, तो जो रिमेनिंग 80 है उसका बाइफर्केशन ऐसे देना होगा जो हम लोग ऑलरेडी आपको सर्कुलेट भी कर चुके हैं और जो प्रोटोकॉल में है देयर आल्सो इट इज अवेलेबल। लेट अस से आउट ऑफ 120 इफ वी पुट फॉर सीवर नेटवर्क, 80 में बाइफर्केशन विल बी लाइक दैट। दिस इज ओनली ए एग्जांपल। लेट अस से 57 आर कनेक्टेड विथ सेप्टिक टैंक। In that case, it will be further bifurcated. Septic tank with soak pit 23. It is soak pit connected with open drain, that will be 10, and septic soak pit connected with closed drain 24. This 8 together will come 57. So household connected with septic tank become one thing. Apart from that, there are other categories where number of household connected with other containment, that is single pit, dry latrine and other. So here you have to put a single pit and then sewage in open drain and also this twin pit. These three things you have to put. So ऐसे columns already स्वच्छतम पोर्टल में भी हैं, प्रोटोकॉल में भी फारीज दिया गया है। हमारे कोऑर्डिनेटर भी जब आपसे कनेक्ट करते हैं दे विल बी एक्सप्लेनिंग। यहाँ पे आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि हम जब डेटा फीड कर रहे हैं तो क्या इस तरह से पहले हमारे पास डेटा सेग्रीगेटेड है तब फीड करें। हमेशा डेटा को कलेक्ट करके एक सीट पे इसी फॉर्मेट में बनाएं और उसके बाद उसमें करें जिससे कि जो एंटर्ड डेटा है उसमें इरोनियस नहीं है। आगे अभी हम दिखाएंगे कि 95% लोगों ने अच्छा डेटा इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन 5% जो कुछ डेटा विदाउट प्रॉपर थिंकिंग और क्रॉस चेकिंग जो एंटर हुए हैं वो पूरे कंट्री का डेटा सेट ही एकदम हम कह सकते हैं कि नॉन रिलायबल टाइप के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने लेकर के और उसमें फिलअप करना है। आई होप यू विल बी गेटिंग। इस तरह से एक बार क्लियर करके करें। सेकेंड जो पॉइंट हमने उसमें दिखाया था 3 पॉइंट जिसमें हमने अपने लोगों का कवरेज स्कोर बढ़ाना है। फर्स्ट हमने इन सीटू वाला बता दिया। सेकेंडली एम्प्टीड एंड ट्रीटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जहां पे सीवर नेटवर्क नहीं है और सेप्टिक टैंक है वहां से आप एसटीपी या एफएसटीपी दोनों में से उसको लेकर के और मैप कर दीजिए कि भाई हमारा यहाँ से जिस यूएलबी में अवेलेबल है लेटर से एसटीपी उसको डाल दें, जहां एफएसटीपी है उसको करेक्टली डाल दें। तो उस केस में जब पीछे वाले में आपने सेप्टिक टैंक और वो डेटा डाला है उसके बेसिस पे मैपिंग हो जाएगा। इसके लिए ये जरूरी है थोड़ा इंफॉर्मेशन रोबस्टनेस के लिए कि आगे हम उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। फीकल स्लज जनरेशन कितना है ओकेएलडी में, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर ऑफ डिस्लजिंग व्हीकल वो कितने हैं, इट में बी यूएलबी ओन्ड, इट में बी contracted also are licensed and some private operator is running. Then design capacity of FSTP in KLD। यहाँ पे हम बार बार ये कर रहे हैं, कई डेटा ऐसे KLD और MLD के चक्कर में हो गया है। देखिए किलो मीन्स 1000, हम 1 लीटर हुआ दैट वी नो, किलो लीटर है 1000 लीटर हुआ, मिलियन लीटर है मतलब वो 10 लाख लीटर हो गया, मतलब 10 लाख लीटर मीन्स 1000 किलो लीटर। तो जब आप देखेंगे लीटर किलो लीटर मीन्स 10 raised to the power 3, MLD मीन्स 10 raised to the power 6। यदि उसमें आपने एक जगह यूनिट में गड़बड़ कर दिया तो 1000 गुना वो बढ़ जाता है, वो सारे डेटा को स्पॉइल कर देता है। तो ये चीज एक ध्यान रखना है। देन एवरेज डेली सेप्टेज ट्रीटेड, इसका भी एक आपने डेटा यहाँ पे फीड करना है।
अब इसमें एक बार देखें डेटा एम्प्टीड एंड ट्रीटेड में कैसे आप मतलब कैलकुलेट करेंगे। जब फीकल स्लज जनरेटेड बेस्ड ऑन करंट पॉपुलेशन, जो ये वो एरिया होगा जो सीवर नेटवर्क से कवर्ड नहीं है। एक टाउन में जब सीवर बिल्कुल नहीं है तो एंटायर एरिया इस पे डिपेंडेंट होगा। उसको आपने ऐसे वर्कआउट करना है, पॉपुलेशन इंटू 76 लीटर पर कैपिटा पर ईयर डिवाइडेड बाई 365 इंटू दिस 1000, ये आपको केएलडी में आ जाएगा। वो उसके लिए है जहां पे सीवर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। जहां पे सीवर नेटवर्क है तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को आप सीवर नेटवर्क में डालिए। जो बैलेंस बचा है उसके लिए केवल हमको इस फीकल स्लज को एम्प्टी करना और ट्रीट करने की जरूरत है। तो इस तरह से क्लैरिटी होना चाहिए। इन सबका एक्सरसाइज करके तब फीड करें, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। Similarly, design capacity in KLD and average daily septage treated, ये जो डेटा फ्रॉम यूएलबी है, दिस शुड इंक्लूड को ट्रीटमेंट एट एसटीपी आल्सो। एंड कई जगहों पे क्या हो रहा है, एवरेज डेली सेप्टेज जो ट्रीटेड है वो जो डिजाइन कैपेसिटी है उससे भी हायर हो जा रहा है। तो जब आप चेक करेंगे इसमें एंट्री में तो आपको पता चलेगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे और भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जो नंबर ऑफ डिसलेजिंग व्हीकल हैं, आप एवरेज एक को 50,000 पे मान लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिकली इन गिवन कंडीशन। तो ऐसे भी जब आप इन डिसलेजिंग व्हीकल का डेटा उसमें डाल देते हैं तो हम लोगों को इसमें क्या दिखाना रहेगा, या आपको भी जो एजेंसी पूछेगी भाई आपने जो सेप्टिक टैंक बनाए हैं उसमें से डिसलेजिंग के लिए आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है कि नहीं, वो जहां ट्रीट हो रहा है उसकी कैपेसिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो इन दोनों तीनों चीजों को करने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ व्हीकल चाहे अपने हो या आपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किए हो, बोथ आर एडमिसिबल। सेप्टिक टैंक का पीछे हमने बता दिया। ये लेके जब एम्प्टी करेंगे और ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके आएंगे तो ये पूरा सेफली मैनेज हो जाएगा। हम लोगों का सारा इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमने दिखाया स्कोर कम है वो एकाएक बढ़ जाएगा। और जो ओडीएफ सर्टिफिकेशन अभी इसी मतलब वेरी क्विकली शुरू होने जा रहा है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो थर्ड पॉइंट था वेस्ट वाटर ट्रीटेड, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे हम कहते हैं लो हैंगिंग जो टाइप का है ना टारगेट, आपके सारे एसटीपी एफएसटीपी बने हुए हैं, उनका सिर्फ करेक्ट डेटा डाल देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि हमारे पास इतना सीवेज रीच हो रहा है, इतना ट्रीट हो रहा है, उस वो फटाफट बढ़ जाएगा। हमने सीपीसीबी के रिपोर्ट में इवन स्वच्छतम पोर्टल पे कई जगह देखा है कि 31,000 के करीब हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और अराउंड 45-50,000 एमएलडी के करीब जनरेट होता है। और इन दोनों में करीब 14-1500 के करीब प्लांट है, चाहे एसटीपी हो या एफएसटीपी हो, को ट्रीटमेंट का भी हो। उन डेटा को सिंपली आप इसमें एक बार एंटर कर देंगे तो ये सारा हम लोग इसमें स्कोर बढ़ा सकते हैं दोनों वाटर प्लस ओडीएफ प्लस प्लस एंड आल्सो जेएमपी में। तो इस सिचुएशन में जब आप देखें हमारी डेटा के रिक्वायरमेंट क्या है, हाउस होल्ड सीटीपीटी कनेक्टेड टू सीवर, ये आप बिल्कुल उसमें करके डेटा ये सिटी के पास अवेलेबल है। ये थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट होगा कि इस वार्ड में कवर्ड है, दैट यू कैन पुट, दैट इज फाइन। वो 1-2-3% से इतना फर्क नहीं आएगा। हम लोग फर्दर डेटा को और क्लीन और इम्प्रूव करते चलेंगे, लेकिन उसकी वजह से नहीं कि एग्जैक्ट आपको नहीं मिला तो आपके पास यू आर क्लूलेस एंड यू आर नॉट डूइंग। जो वार्ड्स में अवेलेबल है वो डेटा अवेलेबल है उसको भी आप ले लें, जिन वार्ड्स में नहीं अवेलेबल है वो सेप्टिक टैंक सोक पिट में आ जाएंगे के डेटा मैनेज कर सकते हैं। डेली सीवेज जनरेशन इन एमएलडी और करंट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन करंट पॉपुलेशन, ये इसी के ऊपर होगा डेली कितना सीवेज जनरेट हो रहा है। और डिजाइन कैपेसिटी ऑफ एसटीपी, ये मिलियन लीटर्स में जो अभी मैंने बताया, लीटर, किलो लीटर और मिलियन लीटर। तो आपको एसटीपी वाला डेटा है नॉर्मली ये मिलियन लीटर में ही आता है। और इसको ध्यान रखना है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 एमएलडी के करीब जनरेट होता है, या हर 10,000 पे 1 एमएलडी के करीब जनरेट होता है। तो इसको आप मिलियन लीटर पर ही करके उसमें फीड करिए डेटा। वहां पे हम दिखाएंगे, कई लोगों ने अभी एग्जाम्पल में लीटर में एंटर किया है, किलो लीटर में एंटर कर दिया है, उससे 1000 गुना बन करके, और जैसे लग रहा है कि जितना कंट्री में जनरेट नहीं होता है उसके 10 गुना ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करना है। एवरेज डेली सीवेज ट्रीटेड, ये डेटा आपको एसटीपी पे अवेलेबल है, उनसे कलेक्ट करके, और इसमें क्यूमुलेटिव डेटा आपने नहीं डालना है, डेली मंथली का जो है एवरेज लेके डाल दें, या इवन जो नॉर्मल में एवरेज आ रहा है उसको भी डालेंगे तो दैट डेटा इज
इज फाइन। टोटल ट्रीटेड वाटर जो यूज हो रहा है उसमें जो भी परसेंटेज हो रहा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रियल में, कहीं भी वो डेटा आपके पास अवेलेबल है तो फिलअप कर सकते हैं। इसमें ये चीज जरूर रखें कि ये जो भी डेटा आ रहा है मल्टीपल लेवल पे इसको हम लोग मतलब वेरीफाई करेंगे। तो कोई भी चीज इधर उधर करेंगे तो अननेसेसरी आपका भी टाइम खराब होगा, हम लोगों का भी खराब होगा, उससे कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। तो वो बिल्कुल एकदम अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए कि इसको हम बढ़ा के करते हैं, उसको कहीं आपको एक्स्ट्रा स्कोर भी नहीं मिलने जा रहा है। दैट बी एश्योर्ड, जितना आप किए हैं बल्कि वही करें। एक्स्ट्रा भरने के चक्कर में कई जगह निगेटिव मार्क है उसमें उल्टा ना हो जाए, वो भी सिचुएशन आपने ध्यान में रखना है। इसको एक बार हम थोड़ा फर्दर एक बार एलोबरेट करते हैं कि डेटा वेस्ट वाटर ट्रीटेड का कैसे हम वेरीफाई करें कि हम जो डेटा हमको मिला है या हमारी अंडरस्टैंडिंग में वो ठीक है कि नहीं। आपको नट सेल में एक ऐसे कर लेना है कि जो सीवर्ड एरिया है उसका जो भी पॉपुलेशन है उसको आप सीधे 100 लीटर से मल्टीप्लाई करके और 10 लाख लीटर से डिवाइड कर दें तो एमएलडी में आ जाएगा। यहाँ जो पॉपुलेशन का फार्मूला दिया है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 135 लीटर, ये जो नॉर्मल वाटर सप्लाई है जनरेशन के पर्पज से, एंड मल्टीप्लाइड बाई 80% सीवर में आता है। तो 80% को 135 से करेंगे तो 108 आएगा। प्लेन आप हमेशा चेक करने के लिए पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख कर दीजिए, आपका एमएलडी में आ जाएगा। इधर कन्वर्जन फार्मूला भी साइड में दिया हुआ है और ये चीज हम लोग अगेन ग्रुप में डालेंगे ताकि आपके जो कोई कलीग एक बार फिर देखना चाहें, फिर डिस्कस करना चाहें, उनके लिए भी दिस ऑल विल बी वेरी वेरी यूज। तो इस तरह से डिजाइन कैपेसिटी जो एमएलडी में होगी वो डेटा फ्रॉम यूएलबी ऑन इंस्टॉल कैपेसिटी, जो भी इंस्टॉल्ड है आपने यहाँ पे डालना है। जो चीज अभी इवन अमृत में सैंक्शन हुआ है या आपका एनएमसीजी में सैंक्शन हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो डेटा यहाँ पे नहीं डालना है। उसके लिए ऑलरेडी जैसे हम लोग स्वच्छतम पोर्टल में जीएमआईएस के थ्रू वो डेटा हम लोग मॉनिटर करेंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, उसको भी डाल करके डुप्लीकेशन नहीं करना है, नहीं तो अगेन हमारा एस्टिमेट अनरिलायबल हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने ध्यान रखना है। Then average daily sewage treated cannot be higher than design capacity। इस तरह के भी मिस्टेक आए हैं कि जितना आपका डिजाइन कैपेसिटी है उससे कई गुना आप ट्रीट कर रहे हैं। नेचुरली इट इज एरर इन डेटा एंट्री। सिमिलरली टोटल ट्रीटेड वेस्ट वाटर रियूज्ड, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ट्रीट हो रहा है उससे ज्यादा तो आप रियूज नहीं कर सकते हैं ना। तो ये मिनिमम चीजें पहले, इसीलिए हम लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं। आप डेटा जो भी कंसर्न एजेंसी है, आपका जल बोर्ड है, सीवरेज बोर्ड है, कारपोरेशन खुद ही मेंटेन कर रहा है, या यूएलबी का कोई जल निगम या ऐसे करके कोई पीएचडी लेकर के मैनेज कर रहा है, उनसे डेटा लेने के बाद ये थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। एक बार क्रॉस चेक करके कहीं जरूरत हो तो आप साथ में एक अपने जो टेक्निकल है, नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे, टेक्निकल जो है उनसे एक बार वेरीफाई करा करके और तब उसमें डेटा डालें, सो दैट एवरीबडी इज रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी क्वालिटी ऑफ डेटा अवेलेबल इन स्वच्छतम पोर्टल, दैट इज हम कह सकते हैं एक्सीलेंट क्वालिटी। इस केस में जो मेजर इश्यूज आते हैं दैट नीड टू बी चेक्ड इज, दो कैटेगरी में है, एक मिसिंग डेटा, एक इरोनियस डेटा। मिसिंग डेटा में जो कैटेगरी है, जो मैं अभी पीछे आपको बोल रहा था कि एग्जांपल्स में वी विल बी एक्सप्लेनिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिसिंग डेटा के, जिनका इंडिविजुअल ईच पॉइंट वाइज वी विल शो एग्जांपल आल्सो। सो इफ यू सी यूएलबीज आर नॉट फिलिंग डेटा, आर फिलिंग डेटा पार्शली। कई जगहों पे क्या है कि सम यूएलबी उन्होंने डेटा इसमें फिलअप ही नहीं किया है। आगे हमने जो आपको बताया कि वो कवरेज का है, चाहे वो इन सीटू IHHL CTPT या साथ में आपका उससे जो कनेक्शंस है, सेप्टिक टैंक, सोक पिट है, ट्विन पिट है, ये डेटा कई जगहों पे पूरा फिल्डअप ही नहीं है या बहुत ही पार्शली फिल्डअप है। तो इसको एक एक्सपेडिशियसली जो हमने बताए हैं उस बेसिस पे जो कंसर्न्ड ऑफिशियल हैं यूएलबी में, कई जगह आप लोग बिल रेज करते हैं, कई जगह मतलब इसके रिकॉर्ड भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारे स्टेट्स हैं कि दे आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड। कई जगह सिटीज में जहाँ पे ऐसे कम हो, वहां पे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है या जो भी इसको ऑपरेशन मेंटेनेंस दे रहे हैं, उनके कंसल्टेशन में आप डेटा लेकर के जनरेट करके और इसमें डाल सकते हैं। Similarly, the current population and number of household to be entered in every ward in each ULB, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो करंट पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड का है, एवरी वार्ड में भी
आपने देखा होगा पीछे सिटी लेवल पे हर चीज को हम लोग वार्ड लेवल पे एक ब्रेक कर रहे हैं, उसी पे इंस्पेक्शन भी होगा और उसका डेटा विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इससे जो कहीं पे मिस्टेक भी होगा एक एक वार्ड लेवल पे, दैट इट विल बी वेरी इजीली ट्रेसेबल। Similarly, third point में if you see design capacity installed of STPs, daily sewage treated at STP, these things has to be entered है ना for each STP. Similarly, design capacity installed of FSTP, ये किलो लीटर में है, ऊपर MLD में था। ये गलती बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रही है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, FSTP KLD में है, उसको फर्दर 1000 से डिवाइड करके 0.002 KLD डाल रहे हैं। कहीं पर आपका MLD में डेटा है तो उसको लीटर में डाल दे रहे हैं, तो 10 लाख टाइम ज्यादा हो जा रहा है। ये डेटा हमें बिल्कुल एकदम क्लींज करके डालना है। सिमिलरली हाउस होल्ड CTPT और जो कनेक्शन टू सीवर है और कंटेनमेंट यूनिट, एवरी वार्ड वाइज हमें ULB में लेकर के और फीड करने हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जो मिसिंग डेटा है इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो टाइप ऑफ इशू जो आ रहा है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जो डेटा फीड है उसमें डेटा रिपोर्टेड विथ इनकरेक्ट यूनिट, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये ऐसे लो हैंगिंग चीजें हैं कि सिंपली आप देख के कर सकते हैं। और ऊपर जो हम लोगों ने क्लू दिए हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप मान लीजिए 1 लाख MLD आ रहा है, 50,000 MLD आ रहा है, वो कभी संभव ही नहीं है। KLD में भी मैक्सिमम जो हमारे पास अभी FSTP कई जगह 50, 60, 75, 100 से सब नीचे हैं। कई स्टेट में 450, 500 ऐसे KLD डाल रखे हैं, उसको रीचेक करने की जरूरत है। सेकेंड जो डेटा में एरर आ रहा है, क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ सीवेज सेप्टेज ट्रीटेड रिजल्टिंग इन लार्ज नंबर। ये क्या हो रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटा जो मंथली है उसको लेके डाल दे रहे हैं, कहीं पे कम है तो इस तरह से नहीं, आपने डेली डेटा डालना है। डेली में से एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा, आपके पास मंथ का डेटा आ गया, उसका एवरेज लेके एक डाल दीजिए। डेली का डेटा अवेलेबल है उसको लेके डालिए, उसमें वेरिएशन 10-15% होगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने पूरे साल का महीने का लेके जोड़ के डाल दिया कि हमारा ज्यादा दिखे या नॉट क्लियर कि व्हाट टू फीड, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, राइट। दैट हैज टू बी अवॉइडेड। Similarly, duplicate data being entered against multiple wards within a ULB or multiple ULB, ये भी कई जगहों पे क्या हो रहा है, जो हम लोग का है ना कि पहले लेके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बाद में करेक्ट करेंगे वो रह जाता है। तो कई ऐसे जगहों पे है कि सिमिलर डेटा कॉपी पेस्ट है, उसको हमें अवॉइड करना है। जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको होलिस्टिकली गुड फेथ में लें। जो हमने बोला न सिर्फ सेक्टर को इंप्रूव करेगा, प्लानिंग, फंडिंग और आगे टारगेट मीट करने में करेगा, हमारा सर्टिफिकेशन में हेल्प करेगा, हमारा इंटरनेशनल रैंकिंग में हेल्प करेगा। और मल्टीपल लेवल पे चेकिंग है, तो कहीं पर भी हमने बताया कि आप गलत करेंगे कहीं पर भी बाय मिस्टेक और नोइंगली, वो चीजें आगे सस्टेन नहीं करेंगी। तो लेटस मतलब डू ड्यू डिलिजेंस बिफोर एंटरिंग दैट डेटा। Similarly, next में if you see data being entered in the MIS by consultant operator without confirmation from technical agency, इसमें क्या होता है, कई बार जैसे इन पोस्ट पे जो भी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट लगाए गए हैं वो आगे भी निकल जाते हैं। तो कोई ऐसा सेट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब हमारे कोई कंसल्टेंट या MIS एक्सपर्ट किसी दूसरे ULB में या किसी अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, तो उनकी जगह पे जिनको भी हम रिक्रूट करें, ये ट्रेनिंग हरदम तो नहीं कंटिन्यू रहेगी, तो वहां पे मैकेनिज्म बना के रखें कि ये पीछे डेटा आया, हम पिछले महीने का ऐसे रखे हैं, मंथली इट हैज टू बी अपडेटेड। तो डेटा कीपिंग मैकेनिज्म और साथ में जो ईच मंथ डेटा आ रहा है उसको कैसे चेक कर रहे हैं, कैसे करेस्पॉन्ड करके करेक्ट कर रहे हैं, और किस लेवल पे हम अप्रूव करा के डेटा MIS में हम स्वच्छतम पोर्टल में एंटर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिज्म के बिना आप इंडिविजुअल पे छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम इस तरह का होगा। आपने देखा होगा, मैं बाद में एक मैसेज ये भी डाला था कि ये चीज एकदम जब नीचे लेवल पे भी छोड़ेंगे तो कई जगहों पे मल्टीपल प्रॉब्लम रहता है। सीनियर लेवल पे मॉनिटरिंग और किस तरह की प्रॉब्लम है वो जानना जरूरी है। इसलिए मैं बोला ये चीज आप लोग जब मिशन डायरेक्टर्स कहीं पे स्टेट से नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग ये प्रेजेंटेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम निकाल के मिशन डायरेक्टर के सामने भी इसको प्रेजेंट करिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑल, तभी जाकर के वो डेटा एकदम ठीक होगा, राइट।
ये एग्जाम्पल है एक जो आपने डेटा रिपोर्ट किया है, इसमें बिल्कुल आप देख लीजिए जो मैं बोल रहा था, नो डेटा प्रोवाइडेड ऑन IHHL, ये तरह की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। नाउ यू हैव टू पॉपुलेट, और इसमें सेंसस पॉपुलेशन के साथ करंट पॉपुलेशन जो अभी 2025 का है वो भी प्रोजेक्ट करके आपने डालना है। बाकी और जो कॉलम से हमने पीछे एक्सप्लेन किया है वो फिल्डअप करना है। ये इंडिकेटर IHHL से रिलेटेड है। सिमिलरली ये देखें जो IHHL पे किस तरह की मिस्टेक, एक एग्जांपल हमने पोर्टल से लिया है। मेनी मतलब कई स्टेट्स में प्रॉब्लम है, हमने कर्नाटका का एक एग्जांपल के लिए आपको लिया है। इसमें जो टोटल स्टेट का फिगर आ रहा है ये 7385 वार्ड्स हैं, हाउस होल्ड 6172,000 है, लेकिन डेटा टू बी नोटेड इज हाउस होल्ड कनेक्टेड विद सेप्टिक टैंक 2,13,000 है, बट हाउस होल्ड कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक विद सोक पिट, मतलब ये कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक विद सोक पिट इज पार्ट ऑफ सेप्टिक टैंक, हियर इट इज मेंशन्ड 8,87,000। तो ये चीज अलग अलग नहीं होना चाहिए। पीछे जो हमने मेंशन किया है कि एक ब्रॉड फिगर हाउस होल्ड कनेक्टेड विद सेप्टिक टैंक, उसके 3-4 टाइप्स हैं, कनेक्टेड विद सेप्टिक टैंक, देन विद ओपन ड्रेन, एंड इस तरह से उसको लेकर के बाइफर्केट करें। ये डेटा में ऐसे इस तरह का डिस्क्रिपेंसी एक बार चेक करें, क्योंकि जब आपका सेप्टिक टैंक में पूरा 2,13,000 आ रहा है तो 8,87,000 सेप्टिक टैंक विद सोक पिट कैन नॉट बी देयर। इस तरह का हर स्टेट से मेरा निवेदन है कि वो लोग इसको एग्जामिन करें और इस तरह से डेटा चेक करें, और ये चीज तभी होगा जब वार्ड लेवल, ULB लेवल एंड देन स्टेट लेवल पे क्लब होगा। सिमिलरली एक जो थर्ड इशू था यूनियस डेटा का, CTPT का, इसमें आप देखेंगे इस केस में, CTPT के केस में जो टोटल नंबर ऑफ हमारे सिटीज हैं, PTs हैं, यूरिनल्स हैं, 8 टुगेदर 62 आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हम ये देखें टोटल CTPT कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक, ये हमारा 41 आ रहा है, और नीचे का ब्रेकअप हमारा एक साथ मैच नहीं कर रहा है, और प्लस ये जो CTPT है ये 62 के ही पार्ट होंगे, मतलब वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वेदर कनेक्टेड टू सेप्टिक टैंक विद सोक पिट। तो इस तरह से जो डेटा में डिस्क्रिपेंसी है इसको आपने एक बार करेक्ट करना है ताकि क्लियर इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, राइट। देन STP के केस में एक देखिए, ये एक एग्जांपल है, हमने पूरा नेशनल लेवल पे हमने इसको लेकर के किया है। हमने जैसे आपको बताया कि इस समय जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है उसमें लेटेस्ट से हम जब 35-40 करोड़ के करीब भी मान लें तो टोटल जो हमारा सीवेज जनरेशन होता है वो 42-45,000 MLD होगा। कुछ इधर उधर सोर्सेस से भी ले लें तो रफ जो होगा 50,000 MLD के करीब टोटल सीवेज जनरेट हो रहा है, 50,000 MLD। लेकिन आप देखिए इसमें जो डाला गया है एवरेज डेली सीवेज जनरेटेड, ये 4,99,000 4,99,043 MLD, कहाँ 50,000 और कहाँ 4 लाख। और हमने आपको बताया कोई भी आदमी एक ग्लांस में देख लेगा कि 1 लाख पॉपुलेशन में 10 MLD होता है, 10,000 पॉपुलेशन में 1 MLD होता है। तो जब इनका अधिकतम अर्बन पॉपुलेशन 40 करोड़ है तो उस केस में मुश्किल से मतलब हम कह सकते हैं कि 40,000 45,000 MLD होना चाहिए। ये इनका 4,99,000 कैसे आ गया, 5 लाख MLD कैसे आ गया। ये कहीं पे वो जो डेटा का हम बोल रहे थे KLD का MLD, MLD का KLD, ऐसे जो केयरलेसली हम कह सकते हैं या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो डेटा एंटर्ड है, ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा ये देखिए सीवेज डेली ट्रीटेड, जितना इसमें मतलब जनरेट हो रहा है 100% सीवेज बीइंग ट्रीटेड, ऑलमोस्ट 98-99%, 4,79,000। ऐसा तो नहीं है ना, एवरीबडी नोज कि हम लोग वहाँ जो सीवेज ट्रीट हो रहा है अभी एक्चुअली वो 35-40% के करीब है, बाकी सेप्टिक टैंक सोक पिट पे है। तो इस तरह से मिस्टेक्स नेशनल लेवल पे नहीं आने चाहिए। फर्दर एक चीज ये देखिए, जो टोटल ट्रीटेड वाटर हम कह सकते हैं जनरेटेड, यहाँ पे ट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट के बाद आ रहा है, ये तो और भी ज्यादा गलत हो गया है। इसमें 41,31,14,890 MLD, ये बहुत ही इरोनियस डेटा एंटर्ड है, इसको मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा लेकिन आप ये देख सकते हैं। तो इस स्टेट ULB से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चीज जब भी करें तो इस डेटा को आप चेक करके प्रॉपर तरीके से डालें। सिमिलरली जो अदर इनोडियस डेटा ULBs के बारे में है उसमें आप ये करके एक बार देखें, एवरेज डेली जो हमारा सीवेज जनरेटेड है
दिस इज, हम इसमें एक देहरादून उत्तराखंड का एग्जांपल लेके डाल रहे हैं कि एक्चुअल मिस्टेक हो कहाँ रहा है। देहरादून में जब आप देखें तो जो करंट हमारा पॉपुलेशन है 8,03,000 है, तो इनका जो जनरेशन करंट में होगा वो 80 MLD, आगे पीछे 10 MLD, इससे ज्यादा नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ वाटर सप्लाई। तो 80-85 MLD होना चाहिए, लेकिन इसमें उन्होंने जो एवरेज डेली सीवेज जनरेटेड डाला है 1,41,037। ये नेचुरली इस तरह का मिस्टेक है। सिमिलरली डेली सीवेज ट्रीटेड ये 1,41,633, मतलब जितना जनरेट नहीं हो रहा है उससे ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये डेटा एक बार केयरफुली देखने की जरूरत है। ये मैं ओनली एक एग्जांपल के लिए ला रहा था, कई और जगहों पे इस तरह के मिस्टेक्स हैं। तो इन चीजों को आप लोग जब देखेंगे, और हमारा जो स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका PMU है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। हर चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे करना फिजिबल नहीं है, स्टेट लेवल पे आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। इस तरह की चीजें ये हम शेयर करेंगे। आप ULB के साथ उनको कंटिन्यूअसली उनके टच में रह करके, और 3-4 दिन के अंदर में इसको कोशिश करें कि डेटा इंप्रूव होकर के हम लोगों के पास आ जाए। ULB के पास भी रहेगा, और हमारे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर और टेक्निकल जो पर्सनल है, दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हेल्प ऑफ स्टेट एनीवेयर इट इज रिक्वायर्ड। ये एक इरोनियस डेटा इन सीवेज जनरेशन बाय ULB में जब आप देखें, अगेन हम एक एग्जांपल उड़ीसा का ले रहे हैं। इसमें अथमलिक करके एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन हम कह सकते हैं 14,000 है। तो ये 1.5 MLD से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट का ध्यान न रखते हुए 44,444, मतलब लगभग 45,000 MLD के करीब किए हैं, जो पूरे उड़ीसा में उतना जनरेट नहीं होता होगा। वो एक 14,000 के टाउन में करके डाले हैं। तो ये डेटा हमें एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। सिमिलरली इरोनियस डेटा ऑन सेप्टेज जनरेशन, इसमें भी एक हमने एग्जांपल लिया है मेघालय का। उनका डेली जनरेशन 247 KLD है, लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट 02 KLD करके डाले हैं, और जबकि वहां पे 12 FSTP है, और जो उनकी कैपेसिटी है, हम सिटी में कह सकते हैं 1022 है। तो ये भी डेटा रिलायबल नहीं लग रहा है कि इतना सारा होने के बाद वर्चुअली नथिंग इज वर्किंग, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। थोड़ा आप एक बार उसको चेक करके देखिए। इरोनियस डेटा ऑन सेप्टेज जनरेशन, सिमिलरली एक हम छत्तीसगढ़ का लेकर के ये डेटा देखें तो यहाँ पे डेली एवरेज सेप्टेज जो जनरेटेड है उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा करके आ रही है। ये आप सिटी वाइज करके चेक करें, इतना नहीं आएगा। जो ऊपर हमने फार्मूला दिया है उसके अनुसार क्रॉस चेक करें तो दिस विल बी फाइन। सिमिलरली एक इरोनियस डेटा इन डिसलजिंग ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम तमिलनाडु का लेकर के दे रहे हैं। ये विच सिटी का है? हाँ, ये चेन्नई का है। इस केस में आप करके देखेंगे कि जो CPHO ने एक कैलकुलेटर दिया है कि अप्रॉक्सीमेट हाउ मच रिक्वायर्ड, ये 590 के करीब इट विल बी नंबर ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड टू डू डिसलजिंग, 590। but they are mentioning ki dislodging vehicles available with ULB is 6,551. It appears that it is not only dislodging but other type of vehicles also they have erroneously entered. और इस तरह से जो मैकेनिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है that number is also high. तो such type of mistake should be rechecked at ULB level, state level, and data should be corrected. तो ये टोटल था जो मैं आपको स्वच्छतम पोर्टल पे डेटा करेक्शन के बारे में मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करना चाहता था, सो दैट ऑल ऑफ ULBs itself are empowered that how to मतलब collect correct data, check that correct data, and then feed so that there is very minimal mistake. Similarly at state level also this sort of checks are required. ये support team है MOHUA से, you may be aware from technical single point of contact and state coordinator. These things we will share. If you have any query, any doubt, any help, these people will be available all 24/7 to help you जब भी जरूरत होता है। तो this was related to data and other। लेकिन एक हमारा PMU IT team Mr. Manish will present that हाउ टू एंटर डेटा। उसमें भी कई जगहों पे, जैसे मैं बोला, बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं कई लेवल पे, तो उसमें दे शुड बी फेमिलियराइज। उसके लिए दैट थिंग्स इज आल्सो बीइंग प्रेजेंटेड, दैट हाउ टू फीड डेटा, एंड लाइव में भी वो शो करके 1-2 एग्जांपल दिखाएंगे जिससे कि एकदम क्लियर क्लैरिटी आ जाएगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई रिक्वेस्ट नाउ मनीष टू प्लीज शेयर योर प्रेजेंटेशन एंड टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Yeah, thank you.
Thank you, sir. Thanks for this nice presentation and set up the context and highlight the issues which we are facing, our daily operations and to streamline the data. Manish, please share. Yeah, sir. I'm sharing. Yeah, I think Manish, you please have. share your presentation. Yeah, I'm sharing, sir. I was just presenting something. Just. Yeah. So I hope my screen is visible. So Ashish and someone else from who are co-hosts can. Yeah, that's fine. Okay. Thank you. Thanks everyone. So we will just start that, what we have learned so far from the PPT is that we have that ODF assessment as well as the JMP program where we have to improve the ranking of the country. So for that various parameters we have developed in the Swachhatam portal, various data feeds actually. And if you see in during this window of ODF assessment, a lot of parameters have been reduced also. Why we have reduced? Because at the time of submission, cities should not face so much data consolidation, document uploading, consolidation, etc. So we have created some fields in the Swachhatam portal that will cater both purpose, our ODF assessment as well as the JMP requirements. So firstly, I will take three parts. Firstly, I will explain how this Excel sheet which you are seeing right now, that what are the various data feeds we have created. Then we will see that we have already created, or some sessions we have already done with the state and duties with the help of a user manual, which will guide you in your daily basis that how you can operate and how you can fill this data in the Swachhatam portal. Then we will have a little demo on the Swachhatam portal that how a state can monitor the things and this one. So let me start the Excel sheet. So if you see around more than 45 parameters, around 45 parameters have been created in the Swachhatam portal, and these 45 parameters are in the various forms. Like some are in the city form, some are in the ward form, some are in the CTPT form, some are in Sapai Mein Suraksha form. So this Excel sheet will help you to understand. What I will do, I will put this Excel sheet in the user manual as well. So if you see, there are some parameters which we are capturing in the city level. So like, key your census 2011, is there any O&M mechanism present for your CTPT urinals? If yes, then document of this O&M, how you are. I can do. So, and there is 100 O&M, then there is like O&M cost of your civil net, how you are recovering it. If you are recovering, then what is the total cost you are recovering? So in that way, various parameters are there. You can go through it one by one. There is an echo coming from your side. Can you please check? Okay, just now let me see. Wait, everyone, just we are muting and unmuting again. So might be this could be just a moment. Yeah, okay, right. So, audible, I'm audible, right? So these are the parameters like, is there any septic desludging mechanism exists? What is the mechanical cleaning used for septic tank? These are parameters. We will see in Swastham portal also. These are all we captured in the city details. We will put this mapping of parameters as against the forms in the user manual also. So that will also help you. Then there are some details that which we see in our PPT also, that household connected to Seval network, septic tank with soak pit, septic tank without soak pit with open drain, septic tank without soak pit in a closed drain. So these all we are capturing under ward. So what you need to do in each ward, you will get this form. So the
fields which are on city level, this is one time only you have to enter. But the fields which are on ward levels, every time for against each ward you have to enter it. So like that in your city, if you have 10 ward, then you have 10 ward details. So against each ward you have to submit that how many household for my this particular wards are connected to sewer network, septic tank, etc. Now there are some parameters which are related to CTPT. So like total number of community toilets, total number of public toilets, total number of CTPT, these all are we are taking from the community and public toilet modules. So once you are added your toilet, you have to tag the type of this toilet. So if you tag you are added, accordingly these parameters will be, we can capture it from the backend. Now, if you are creating a CTPT, then again there are forms where against each toilet you have to provide that it is connected to a septic tank with soak pit, without soak pit. So these all parameters are under CTPT. Then some parameters are monthly progress. So these, whatever we have discussed so far are the master data. You know, whenever there is an updation, then only you are doing it. But rest, every month you are filling data of your SWM as well as UWM. So like average daily sewage generated, treated, after treated, how much is getting generated, how much you are reusing. These all are coming into the monthly progress. But here I want to highlight that what we have seen is that all cities are majorly filling the SWM data. So we are getting a good SWM data, but many of the cities are not filling the UWM, use water data, in their monthly progress. So it is my humble request that whenever you are filling your monthly progress, apart from SWM, as well as give the details of your UWM also. So this will mitigate the problem of data integrity, data consolidation as well. So this is the thing. So every month, please provide this data also. This is one thing. Then there are some parameters related to notifications, like have you notified your RSA? If RSA notified, then what is the supporting document? If this notification you have done about the open urination and untreated dumping of fecal. So these are under notification, you will get this data. You have to upload the notification if you want to upload it yet. Then there are some parameters related to how many equipments you are using, how many safety gears, PPE kits you are using. That parameters you will find under the Safai Mitra Suraksha form. So that we will again see in the Swastham portal. Then there are of course some parameters related to processing plants, which are basically how many FTP you are having, how many STP you are having, count of your STP, FSTP, as well as the design capacity of the STP, FSTP. Here again, I want to highlight that although Chaurasia sir clearly highlighted what of the major problem we have seen, that STP we are asking MLD, but they are putting in liters. So these kind of issues, so you have to properly see what kind of unit you are using, not only in UW, anywhere in the system if we are using, what kind of quantity we are asking. We are asking in ton per day or in KLD or an MLD. In that way, you have to, before filling the data, please ensure that the unit which you are filling is right or not, right? So this is one thing, as well as another thing in this parameter is basically whenever you are getting a plant, then you have to properly tag this is an operational plant or currently it is a non-functional. Non-functional can be in the case of defunct, under maintenance right now, or under upgradation. In that way, you have to make it from operation to non-functional. So in that way, properly update your master data also. And another point which I want to highlight for the state specifically. So at the data granularity level is ULB level. So ULB has their login, they are filling all of the data, but one of the things we have seen that the state are not continuously, verifying and validating this data. So my humble suggestion is that whoever state is looking into, at least by monthly, you could just go through your states. There are various dashboards available under state login. You can go through and see it. We have a dedicated JMP dashboard also. We will go through it, and then this will facilitate state to see the data, highlights the deviation, at least outliers. You can directly find it out, and these outliers only disbalancing the overall country data. So firstly, and this is very low hanging kind of thing, you just download the Excel, put a descending, and you can find where are the outliers, and then you can talk about the corresponding ULBs and rectify this data. So this is my first part of my presentation. Now I will come to the user manual. So if you see in our Swachhatam portal, we have already, here we have a section of user manual. If you click on user manual, you will find this JMP parameter user manual, which I'm going to explain you right now. So firstly, download this in your system, go through it, understand this
This will help you to identify which parameter is under which form. So this detailed user manual is there. Let me just quickly go through with this user manual. So like you log in this system, and after that, the first profile like census 2011. So it will show me that, this is my household. So this I will update under the about city, although this is while onboarding the ULB only, it is there. So every time you need not to edit it. Then we have seen that, data related to household connected to saver network, septic tank with soak pit, without soak pit to connect it, without soak pit to close drain, and connected with other containment type. So if you see for these all parameters, you have to go under city profile ward details. This form will open under the ward details. You have SWM section, CND section, sanitation section. You have to go under sanitation sector. All these parameters you have to fill. Then we have some parameter related to CTPT. So what you need to do, you have to go to CTPT. You have to add, for edit, you can edit any of this form by click on the I button, then edit button. But if you want to add a new, you can add a new CTPT here. Or for each CTPT under this toilet block address, you have this field is available. This CTPT is connected to WIT. It's a sewer or drainage or online septic or other containment type. If you click on signs, like you can select sewer, you can select on-site septic tank. You can select on-site septic tank that you have with soak pit or without soak pit, or without soak pit connected to a closed drain or connected to an open drain. In that way, these all CTPT details you have to fill it. So if you are adding new, that is fine. But if you also need to visit your already added CTPT, and if you want to edit this data, you can click on edit and then you can edit this data. Okay. Now, if you see, there is question, is there an O&M mechanism present for CTPT uriners in the city? For that, you have to go to city level details under the sanitation. Under the sanitation, this question will come, is there an O&M mechanism? If you select on yes, then you have to click on this. Then you have to upload the file for the O&M document. What is this O&M document, or how you are capturing it? Then you have treatment, like, the average daily sewage generated, average daily sewage generated, sewage treated, septic treated, total treated water reuse. These all we are capturing under the monthly progress. So these all will come under monthly progress, which I think you all are aware about. So this problem here is that only many cities are not giving the data related to UWM. So, but SWM data is clearly coming. So you have to fill UWM data also. There is, these all details will be captured in your monthly progress. This data will come every month. And in our analysis, everything what we do the 3 months and average or 6 months average. In that way, we do our calculation. So it is important to fill this data every month. Now, this about, we are asking how many STPs and what is the design. So definitely you all know that in city facility, you have a processing plant module where you have to go add your new plant, and then you have to select the STP plant, and design capacity will also come. These all will be solve this purpose under this processing plant. Now we have a level of treatment provided, primary, secondary, or tertiary. Though if you select secondary, this form will under subcategory, this option will come and you can select it accordingly. Then is co-treatment be carried out? It means in the under the STP, if you are in your input, you are putting sewage and fecal, it means it is a co-treatment plant. Accordingly, you have to provide the this unit for STP, how much MLD, and fecal how much KL. Then again, similar way, we are also asking number of FSTP, number of design of the, this is same. You have to go city facility processing plant, add new again. You have to just go to the FSTP, add FSTP and the design capacity. Here suggestion is that only I understand that, already all STP and FSTP are in the system. If you need to add any, you can add new, and otherwise you just revisit your all FTP, STP1. It will not take much time, and reassure that the design capacity you have put there, it is right. Input capacity you have put, it is right, as well as in this, correct unit. So just revisit, validate this data. So this will be a great help. Okay. Now, then there are some questions related to is 100% O&M cost of sewer network STP are being recovered. So this parameter is under the city profile, city level details. Go to this one, select yes or no. If yes, if you select yes, then it will ask if O&M costs are being recovered from revenue stream, then provide the total cost. So you have to provide total cost, how much revenue you are creating.
Okay, now this whether septage desludging mechanism exists or functional, this is again under city level details. So this is here only. So you have to just select yes or no. Similar is mechanical cleaning used for septic. This is under city level details. So in that way, you can find everything in this user manual. So every parameter has mentioned, and in that way, total mechanized equipment required per as per CPHO calculator. So this is captured here, and total mechanized equipment available. This is under the Safai Mitra form. So under the Safai Mitra, you have to select that, how many machine core domain equipment you have, how many special equipment you have. These all details you have to provide. So these will serve me to purpose that as per calculator, how much is required and what actually you are having right now. So this comparison can be done. In the similar way, how many desludging vehicle you required, it will be come under city level details. How much you require and how much you are having, this will come from vehicle master. So at all your vehicle, you have to update in the vehicle master. Then total PP kits required, again as per benchmark, you will capture it under the city level details, but how much you are actually having, that will come under the Safai Mitra Suraksha module. If you go, there is a proper section. So that will be come here, PP, this will come from here. Then total workers required as per CPHO, this will come under city level details. But how much actual worker you are having, how many actual worker you are having, that will come under workforce master. In workforce master, you have various categories: MIS, IT operator, Safai Mitra Kamchari, etc. Then accordingly, all your workforce master should be available here. Then all private desludging services provided are registered and licensed by ULB Development Authority Control. This is come under the city level detail. This is the question. You have to fill this. Then has city issued any notification? That's, you have a separate notification management here. Here generally what you do, whatever notification come, we upload it. You select that particular notification, put when you have started this notification, and your notification copy you uploaded it here. So just ensure that all notifications and properly you have submitted and put yes or no against that. Then if is any ICT based complaint mechanism available for septic cleaning and all, so this will come under city level detail. Under yes, no, you have to select it. If yes, then are you maintaining this record? If you have any mechanism, then are you maintaining the proper record? Yes or no, or not applicable, you have to do that. So these are all parameters which we are capturing. Now we will move to the Swachhatam portal and we will see a little bit about this. So let me allow to log in from a city first. So of course you have to go to this user manual. You download this user manual. It will guide you, and then you will log in here. Now, majorly, if you go to city profile, about city, this is your census 2011 household, which is one of the critical parameter. But of course, you do not edit it, because whenever your city onboarded, this data is there only. Thus, you visit it. If you want any discrepancy, just write it to from backend. We will update this data. But this is not a much problem here. If you now go to the city level details. So this in city level details, these are various normal question city level declarations. Then we have various section. That we have a SWM section, we have a CND waste section, we have sanitation section, and then we have user fee section, citizen engagement section. The various sections are divided, and each questions mapped to the particular section. Your focus for JMP and ODF is sanitation section. So if you go to sanitation section, here my questions will be available. Like this is my city question. So if I search this question here, this question is there. Is there any ONM mechanism present? If I select yes, then I have to download this file. If ONM mechanism present for CTPT, then upload the ONM document. So in that way, this question you will find here. So similar, some question is that 100% ONM cost of civil network, are you recovering? If yes or no, if you are not if you are recovering, how much cost you are recovering? So that city is already filled this data. So ये आप देखेंगे ONM 100% ONM है तो उसका whatever is the amount. Then is there any septic desludging mechanism available? So these questions easy. तो nothing you have to do. Just आप अपना ये वाला शीट खोलिए, सिटी प्रोफाइल पे जाइए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पे जाना है. यू कैन जस्ट इवन कॉपी पेस्ट, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन हियर, एंड फ्रॉम यूजर मैनुअल यू कैन मर्ज इट. सिमिलरली इफ यू गो टू वार्ड डिटेल्स, so ward details क्या है कि this is my city and these are all my wards which I have mapped. So under this city I have 48 wards. So against each ward I have to go, like this Bhagwanpur ward I will go. Then again there is a SWM section. All questions related to SWM here. Sanitation related question are here.
this is so like some of the questions if you see for my ward details is basically households connected with sewer network, septic tank, with soak pit, without soak pit. Manish, you're not audible. If you can hear me. Yes, Pooja, give me. Disconnected. आवाज बंद कराइए। Am I audible? Minutes, I think we have some issues. 2 minutes, please. Yeah, Pooja, am I audible? Am I audible, my guys? Yeah, Manish, you're audible. Acha. So, Pooja, actually, sorry, everyone, my system got some restart on some updates, so I got disconnected from my system. Now I am using Ashish system. Thanks, Ashish. So, just allow me to share the screen just a moment. Okay, just a moment. Let me. Yeah, so I think we were in ward details. So if you go to ward details, then there is a sanitation section. These all questions are here. So it's a very easy step. You just need to download the user manual. Under each user manual, each form is available. So similar, if you go to we have seen some parameters in the CTPT. You have go to CTPT. Then if you add a new CTPT, that is fine. Then you have to add new. If you see, it is asking me. So these are the parameters which are Capricorn, JMP, and ODF, that how this CTPT is connected. It's connected to a sewer or a drainage or an on-site septic, if an on-site septic tank with soak pit, without soak pit. In that way, you have to provide this detail. If you want to edit a new, then you have to click on this view button. Then you have to go to edit. So this form will open in the edit form. Then you have to provide this detail again. So you just revisit that your data is right or not. If it's not, accordingly you can edit. This is all CTPT. कुछ पैरामीटर्स हमने देखे थे सिटी प्रोफाइल का कि लाइक इन सिटी लेवल्स में बट वी हैव सीन दैट CPH that total mechanized equipment available required as per CPHO, how many desludging vehicles required as per CPHO, total PPE, total workers required as per. So these all will come here. But this actual workers will come from workforce master, जो आपके लेफ्ट में आपको दिख रहा है workforce master menu में you can go upload your workforce master. You have to update your vehicle master also, how many vehicles you are having. So that comparison will be done. बट ये जो दो पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, हाउ मेनी डीस्लजिंग टोटल पीपी किट्स और टोटल मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट, ये तो हमने मांगे हैं कि एज पर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट व्हाट एक्चुअली यू आर हैविंग फॉर दैट यू हैव टू गो टू सिटी प्रोफाइल. सिटी प्रोफाइल में सफाई मित्र सुरक्षा शहर, देन यू विल गो टू सफाई मित्र सुरक्षा डिटेल्स.
ये देखिए यहाँ पे इस सिटी का एक पूरा डिटेल खुल गया, सफाई में सुरक्षा का, ये बेसिक डिटेल मांगी जा रही है। उसके बाद ये कुछ एडिशनल डिटेल है कि आप आरएसयू क्या है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, दीज ऑल डिटेल्स आर देयर। नाउ दीज आर टू सेक्शंस रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स, यू नो, लाइक सफाई मित्र सुरक्षा मशीन डोमेन कोर इक्विपमेंट, सफाई मित्र सुरक्षा मशीन कोर डोमेन स्पेशल इक्विपमेंट। यहाँ पे इक्विपमेंट के टाइप दिए हुए हैं, यू हैव टू प्रोवाइड दी नंबर हेयर कि कैसे कैसे नंबर देना है, तो ये प्रॉपर सेक्शन आपको भरना है। नीचे इफ यू कम डाउन देयर इज अ सेक्शन फॉर दी पीपी किट्स, that jackets, helmets, face mask, gloves, etc. all PPE equipments which you are having, that all you need to provide. that उसमें से जैकेट कितने आपके पास है, उसमें यूएलबी ऑन कितने, आउटसोर्स कितना है, अगर आप इसको भरते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे if I just want to show you like 35 है, मैं यहाँ पे अगर इसको आउटसोर्स by if I say 10 then automatically it will become 45. In that way this data you have to provide. So these are related to सफाई मित्र सुरक्षा. Similar some data in our city facilities, processing plants, which are basically my plants. So if I, what you need to do, you just select first कि मैंने FSTP के कौन से प्लांट भरे हुए हैं. तो like यहाँ पे एक FSTP का प्लांट है, so I can just revisit it, I can view it, and I can check that design capacity जो मैंने यहाँ भरी है KLD में, it is right or not. If it is not right, I will go to edit and then I can update this data. कि इसका टाइप क्या है, इसका डिजाइन कैपेसिटी इज राइट और नॉट, एक्चुअल इनपुट जो कैपेसिटी आ रहा है दिस इज राइट और नॉट. सो सिमिलर अगेन ऐड न्यू करके यू कैन ऐड द न्यू प्लांट आल्सो. सो इसमें आपका एफटीपी का डिटेल्स, एफएसटीपी का डिटेल्स, एसटीपी एंड एफएसटीपी बोथ डिटेल्स यू हैव टू जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर नंबर ऑफ प्लांट्स आई एम हैविंग that are captured in the Swachhatam or not. If not, add this. If it is already added, go visit that and see their design capacity, functionality, operational functionality is right or not. So in that way, these all data is there. So again, I will just repeat it. So what you need to do, you just launch into the Swachhatam portal, go to user manual, download this user manual. Currently, I'm just downloading it. Every step is mentioned here. Go each step and update your data and verify your data accordingly. So this is the third part of my presentation. Now I come to the last part of my presentation, how you will monitor, how you will ensure that, whatever ULBs are speaking as a state, as a monitoring agency, are you able to understand, do you have any tool to available, so that you can monitor, identify where is the data issue. So nothing, you have to just log in with your, state username and password. So right now I don't have any state one, but I'm just showing you from my login, which is a central login. So what you need to do, in ULB will fill the data. They are the data granted, they will fill the data. Now as a state, what you need to do as a state thing, you have to go to analytics and report. You have to go to JMP indicator report. You will go, so you will get a one view of all your indicators which we have discussed so far. Okay, so like you will get one view. This is my national view. So I am getting that how many overall watts we are having. So let's take an example of a state. So once like if I take Odisha, so once Odisha state nodal officer will log in, he will get this view. So he can be able to see only the Odisha data. So they can say that under Odisha state, I have total so many watts. How many households connected to saver network, how many with septic tank, how many with soak pit, these all parameters will come. If you want, you go to here, the details will be shared here, my state, my district, my ULB code, ward. So like that under this Talchar ULB, I am having so many wards is here. These all my Talchar wards. Then what is the ward number as per Swachhatam portal? What is the ward population? So here you can get all ward population. Under the ward details, you have this ward population. You can verify this detail. Then my city population, of course, it will be repeated because it's a city population. Then city census, household connected with every data is connecting here. So you just need to go to here, this 3 dot. You can export it to Excel. Then in your Excel, you can verify, highlight where is the problem. In that way, you can see it. Similar CTPT. So here CTPT data you will get how many CT, how many PT I am having. So again, I just put a filter on Odisha because this is my login, so I am getting everything. So Odisha mein you can see how many CT, how many PT, how many urinals, how many are connected to sewer network, how many are septic tank. So in that way you can see there is a detailed Excel available here with all these parameters. You can download it. You can highlight where is a discrepancy. Then you can communicate with your cities.
So like that STP we were seeing in one PPT for Odisha is that, like this is Odisha. So this is the STP data, how many generated, how much is treated in that way. And we were seeing that there is discrepancies issue also. So like if you see here, so state can directly see that this is my census population 12 to 98, but it average treated water generated is coming 4441. So definitely there is a data entry. We have to, revisit it. Similarly, if you see here, so much 14, 524, 417. In that way, we have to see that as per the census population, is this right data or not? Simply, if you can download this Excel and put a descending order in this field, automatically you get a data outliers there as well. So in that way, you can see everything, STP details, you can see my FSTP details, you can see the section on FSTP. This is the desludging details, which we have discussed about the PP kits, equipments, etc. That all details you will get, that this is my ULB code, population, etc. Whether O&M cost recovering or not recovering, seepage desludging mechanism exists or not exist, mechanical cleaning is using or not, how many vehicles required as per CPHO, and how many vehicles actually we are having right now from the vehicle master. Similar, these are related to total mechanical equipment required as per CPHO. This will come from city level detail, and how much actual equipment we are having. This sum is coming from the Savai Suraksha assessment. So similar PP kits from city level details, and how much actually you are having. This is coming from Savai Suraksha details. So in that way, this one view is available here. For state, it is a request, go through, access this dashboard, see the data, and identify the discrepancies. Accordingly, reach out to your ULBs and try to assist them. Our team is also here so that data can be rectified. So in a nutshell, I will stop here so that I will pass it to the next person. But in a nutshell, I want to summarize this all discussion that, there are the data issues. So we have created some data fields so that this data can be, corrected. There is a dedicated user manual. Go through user manual, download it first, put some half an hour to understand what are various fields are available. Then go to Swachhatam portal, update your city data as a state person, also understand these all parameters, in which area this is, then use this dashboard, analytics and dashboard JMP indicator, to understand your city data, identify the discrepancies, and then reach out to ULs. So I think I will stop here. Thank you. And Pooja, anything else, I would be happy to tell further. Otherwise, you can take this session further. Thank you. Yeah, thank you, Manish. So with this we conclude our session. So we'll just take up a few questions. Manish, if you're still online, there are some questions related to the MIS. So one was where they are saying that the first question was related to the data is a functionality to download the consolidated Excel of all ULBs at the state level. Can you answer this question, Yeah. Manish? Just a minute. Yeah. So this is the specific question is, yeah, Manish, the specific question is there a functionality to download consolidated Excel of all ULBs at state level, yes, which has all the newly added WORD parameters for purpose of validation? Yeah. Yes. So the thing is that only that the portal which I have just seen right now, that report, JMP indicator dashboard. So these all are downloadable. These you can download all this in Excel. All ULB details will be coming there. Another question was regarding the decimal point. It is not accepting one question which has come. Can you see? We cannot put decimal values in the capacity. It is not accepting. Can you please check this? I need to check this. I will discuss with the corresponding. If it is not accepting, might be that was a requirement to not accept it. I will discuss it. If it is required, it's not a big deal. We can change it. I understand capacity in the, if we are discussing STP and FSTP plants, might be they were talking about. I will look into. If it is not, then might be there's some validation we should have that it should not be accepted. But I will discuss with your assessor accordingly. If required, it's not a big deal. We will do it. Okay. Thank you. One more
which is there on the portal is, which has come is that the city has a hybrid model for CTPT and O&M. Means it has both, it is being managed both by the community and the ULB. There is only two options currently. So Manish, we need to check into this key. If there is a hybrid model, what is it that the ULBs can fill? We'll get back to you on this. Second was, there's a question on the verification which is done for IHHL. So how is it that we are following the sample size and all? It has been given in the protocol itself. And when it comes to we understand that we will be coordinating with the ULB for the same so that we get access to the toilets. Another query that has water treat should be relaxed for ULBs with less than 50K population. I'll just let Sir answer this question. Wastewater treated parameter should be relaxed for ULBs less than 50K, as there is hardly any treated water practically and negligible reuse of treated water. नहीं यहाँ पे what I would like to mention as for this मतलब exercise whether ODF or JMP is concerned, secondary treated is more than sufficient. Regarding standards, we are constituting a committee and very shortly will come out with graded, I will say, standards subject to मतलब approval by various authority. So what you are mentioning for less than 50,000 population, those things will come, but right now it is not there, and these things we are going to solve very quickly. Sir, another question was regarding the base year to be considered while updating. It has to be current. This 2011 is only for those ULB we are taking this because that is last census data available. But for all facility, whether we are providing infrastructure or this updating data, this should be for current because whatever new houses has come after 2011, those information also to be put here in the portal. Right? Yes, sir. Another was ULB did not have STP and FSTP plant in ULB, but ULB has a co-treatment plant with nearby ULB. How to fill the data in the Google Sheet? So in that case, only you have to mention that जो nearby whatever the town where you are sending this fecal sludge for co-treatment, that mention should be there. I don't know whether it is readily available in portal or not. We'll have to check, sir. For portal, we'll check and we'll create if it is not there. We have noted down. Okay. Sir, somebody is asking for the CPHU norms, but when we share the PPT, we have those indicators also in it. Then इसमें जो भी queries हैं on the group today itself we will by evening prepare a let us say response of all these questions and post so that in written manner query and response is right. yes, so we would request all states to kind of give their queries, whatever queries that you have put in the chat box, जो आपने डाली है, वो तो we consider, but we would also request that once we share the PPT, the contacts of your state coordinators is also there. So if you can share your queries with them, we will give a response to it. We'll consolidate and we'll give a response to it to everyone. So with this, we will end this meeting. Thank you everybody for joining. Thank you everybody. Deadline for JMP data. And Yeah. this data we mentioned, we will as all these exercise has been done, we request that next in 2 to 3 days you please fill up all this information. Monday ko we are going to see and download and check, and then we will decide ki to send JMP or there is further some improvement. But as far as timeline is concerned, we request that within next 2 to 3 days please complete, and whatever help required, our people are always there to help. Right? Thank you. Thank you everyone. Thank you.